and our velocity, here is the story point would be 5, 10, 20, 5, 2 suppose, and our velocity is 35. So what we will take first? We will consider first because it's a priority 1. Again another after that we will consider 2. How much? 25, still 10. Then we will consider 3 priority, this one, and 35 done. So we are not going to do apart from this in this sprint. This will in the next sprint. If this is higher, having higher priority, product owner responsibility to define it's a higher priority. The time of a sprint planning first, if the define is like the priority 5, we are not going to take it because we already cover the velocity. And this whole will come in the sprint backlog. These things, the selected one. Okay? Yes. One more question. Yeah. इसमें burn down charts वगैरह में इसमें scope अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए स्कोप बढ़ जाए मतलब क्या? मतलब यूजर स्टोरीज का जो चेंजेस आ जाए स्प्रिंट के बीच में। हाँ तो वो आ जाएगा ना, डेविएशन आ जाएगा उसमें, बर्डन चार्ट में डेविएशन आ जाएगा। There will be deviation in the burn down chart. तो मतलब सर उससे स्प्रिंट का टाइम नहीं बढ़ेगा? If such type of thing is coming, then you have to stop the job. मैंने बोला था जब डिफाइन कर रहा था, like some sprint backlog sprint, previous sprint का कोई बग आ गया प्रोडक्शन का रिलीज के बाद, and product owner want to be in urgent basis. You have the time, you can do, no problem. If you have the time in within the sprint, but if you don't have the time, then you have to stop the particular do 1, 2, 3 job, and then you can do. On that case, जो 2-3 जॉब स्टॉप हुआ है वो वापस प्रोडक्ट बैकलॉग में आ जाएगा स्प्रिंट के बाद, स्प्रिंट रिव्यू के बाद वो वापस प्रोडक्ट बैकलॉग में आ जाएगा। इसमें पैरेलल स्प्रिंट्स चल सकता है? पैरेलल मतलब एक स्प्रिंट में हमने जैसे 35 यूजर स्टोरी पॉइंट्स, हाँ और प्रोडक्ट ओनर चाहता है कि और भी मतलब मुझे हाँ तो है ना, एक टीम इस पे कर रहा है, दूसरे बार दूसरे स्प्रिंट प्लानिंग में बोलो यहाँ से उठा लेना, उसका मतलब अलग ब्रांचेस होंगी ना उसकी? हाँ वो ब्रांचेज होती हैं। वो जब आप अगर आई डोंट नो कि टीएफएस कैसे मैनेज करता है मुझे नहीं पता, मैं जो परफोर्स में काम किया हूँ, P4 में काम किया हूँ, सो वंस यू विल कम इनटू द परफोर्स इज आल्सो लाइक अ सोर्स सेम लाइक टीएफएस एंड एनी अदर एल्स, सो और एसवीएन, सो इन द परफोर्स यू विल सी लाइक सम दे हैव द स्प्रिंट रिलेटेड a stream, so a stream for particular task you can create the replica of production code for the particular task. यहाँ पे ऐसे ही होगा कुछ एसवीएन में है ऐसा कुछ ऑलमोस्ट सभी में ऐसे इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। बैकलॉग से प्रायोरिटी के टास्क मूव हो गए, जिनकी प्रायोरिटी दोबारा से डिफाइन होगी। अगर प्रोडक्ट बैकलॉग से टास्क के मूव होकर आ गया तो फिर इनका प्रायोरिटी जो है ना, अभी तो फिलहाल अगर फिर तुरंत दूसरे मीटिंग के साथ है, दूसरे टीम के साथ है, इसी प्रायोरिटी पे काम आएगा, लेकिन जैसे ही फिर कल हो गया तो वो डिफाइन कर सकता है। टोटली डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ओनर के मूड पे, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ओनर, वी आर नॉट अ पर्सन टू डिफाइन रीडिफाइन दैट, वी आर नॉट अ पर्सन। एक स्प्रिंट में 3 टास्क चलेंगे, हाँ हाँ तो दोबारा जो आ रहा है ना, जो दोबारा आ रहा है वो प्रायोरिटाइज आ रहा है, वो ग्रूम होके आ रहा है अगेन, वो टोटली ग्रूम है, वो 1 वीक का ग्रूमिंग है, 2 वीक का ग्रूमिंग है। वो ऐसा नहीं है कि लास्ट वीक जो हमें मिला था ना, हमने लास्ट वीक में 4th बनाया था ना, माइट ये 4th नहीं होगा, माइट भी पॉसिबली 10 हो जाएगा और यहाँ पे 4 और जुड़ जाएगा नया, माइट भी पॉसिबल दे विल ऐड मोर 5 टास्क, इट्स अ पॉसिबिलिटीज। दे आर द प्रोडक्ट ओनर एंड द बिजनेस एनालिस्ट, द गाइज हु इज टेकिंग मनी only to do the grooming job, their job as per market. Only keyword is as per market because nowadays the competition is so much. There is no backup plan kind of thing. Backup plan means कोई टास्क में हम फेल हो गए विद इन अ स्प्रिंट कि हम ये अगर ऐसे नहीं हो पाया तो हम इस तरह से कर लेंगे या कुछ ऐसा। हाँ बैकअप प्लान डिपेंड अपॉन टाइम, इफ यू हैव द टाइम देन, नहीं तो शॉर्टेज टाइम है ना, तो फिर आप रेट्रोस्पेक्टिव में इस बात पे सोचोगे, रेट्रोस्पेक्टिव हुआ इसीलिए कि आप सोचोगे आपने फेल क्यों किया। इफ योर टास्क इज नॉट perform in within the time, then all the team members sit together and you have to explain not only good thing, bad thing also, why you didn't finish that job. Might be the team member will ask, or you have to, generally you have to say yourself that why it was not completed. So आप कुछ तो बात होगा जो आपने complete नहीं किया, either you were sick, either problem was more, or either we didn't estimate good ways, whatever that was, कुछ तो होगा that you have to define. And the next time when you are picking the task from the product backlog to the sprint backlog in a sprint planning, you have to take care of this. इधर से कोई कुछ बोल रहे थे, क्या था अभिनव, क्या हुआ? क्या हुआ? प्रोडक्ट ओनर से पार्टी कितने दिन बाद मिलेगी? क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्ट पार्टी कितने दिन बाद मिलेगी? प्रोजेक्ट पार्टी हुआ तो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, और वो हमारे नितिन सर पे, यस
वो नितिन सर पे और क्लाइंट पे डिपेंड करता है। यस आशुतोष। जैसे वर्टेक्स में हमारा होता है हाँ। टास्क वगैरह साइन होते हैं, हम स्टैंड अप करते हैं। तो यहाँ पे जो टास्क हम करते हैं डेवलपमेंट टीम, तो वो डेमो वाला जो प्रोसेस है, रिव्यू, जस्ट काइंड ऑफ रिव्यू, what would it will happen after the testing or developer can show? टेस्टिंग वी आर डूइंग इन द डेवलपमेंट टाइम। वो जो 6 दिन का डेवलपमेंट चल रहा था ना, उसमें तुमने वीएम पे टेस्टिंग की है, तो रिव्यू जो कि ऑलरेडी टेस्ट होने के बाद चल रहा है। नहीं, अभी जैसे हमारा क्या होता है कि डेवलपमेंट टीम डेमो बीच में देती है, ठीक है, तो ये सही है? नहीं, बीच में है ही नहीं, वैसा नहीं है कुछ। वन मोर थिंग, अगर आप लोग के टाइम में आ रहा हो कि स्प्रिंट स्टार्ट हुआ, मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पे। स्प्रिंट स्टार्ट हुआ एंड व्हाट द स्टोर्स इज डूइंग 1 and 2 days, बिकॉज फर्स्ट 2 days तो माइट बी कि वो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, सो टेस्ट केस लिखेगा स्टोर्स बैठ के वो 2 दिन तक। ओके, यस, उधर से कोई कुछ पूछ रहे थे। यस आशुतोष, एक यूजर स्टोरी में 5, एक स्प्रिंट में 5 यूजर स्टोरी उठा ली सर। ओके, क्लाइंट इज एक्सपेक्टिंग कि और वो उसके लिए प्रायोरिटी है हाँ, स्प्रिंट में। हाँ, सपोज अगर वो टीम कंप्लीट नहीं कर पा रही एक यूजर स्टोरी, हाँ, हाँ, सर क्या होगा सर? एक यूजर स्टोरेज अगर कंप्लीट नहीं हुआ ना, वो प्रोडक्ट बैकलॉग पे वापस आ जाएगा। पीओ और स्क्रम मास्टर और हायर लेवल ऑफ स्टेक होल्डर माइट विल आस्क यू क्वेश्चंस कि वो क्यों नहीं हुआ, आपका वेलोसिटी क्यों गिर गया, बिकॉज यू पिक दोस टास्क बेस्ड अपॉन वेलोसिटी अंडरस्टैंड और नॉट, yes, your capacity. So if you are not able to do that, means you have to give some clarification why you didn't do, and again it will back to the product backlog. Next sprint, if their priority is same, then you have to do the first. In that case, sprint will be fail or pass. A sprint will pass. The sprint never fail. A sprint only fail on 2 or 3 scenario until or unless product owner will. First scenario is that if there is more changes more than your expectation, a scrum master will ask with the product owner that you are changing whole and soul. We are not going to give you the main sprint plan, so better to cancel this sprint and new sprint will come. First, second, where I was, oh yeah, a sprint cancel. Yeah, second thing is that some bugs come, and you have to define that. You have to do. Then product owner can say, and you have to cancel the sprint and new sprint might become, depend upon the time availability and all these things. Third, might be the sprint started 1 day, 2 days. Suddenly product owner came to your Scrum master, hey Mr. Scrum, do you know that whatever we are going to create in this sprint, there is no any validity. I just listened that market is totally changed, and whatever we are creating, they don't have any market value. Product owner is having the ultimate product owner can cancel the sprint. So product owner can say that okay, cancel this sprint and we will do the sprint planning tomorrow next. That is the thing. Another question. That's all. डेवलपर आराम करेगा ना सुबह को, लास्ट डे जब रिव्यू चल रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव में मस्ती कर सकते हो। बियर का पार्टी नहीं है, बियर तो तुम्हें बाद में ही मिलेगा। रिव्यू के दिन बम फट गया तो रिलीज के दिन तो बम फटेगा तो करना ही, उसका कोई टेंशन नहीं, वो तो डेवलपर मर्दी के लिए पैदा ही लिए हैं। सो दैट इज नथिंग। Who is responsible for quality? All the time, Asutosh. Who is doing the testing? Quality is the first of the sprint. One, the sprint is defined. You didn't understand the process. In the sprint planning, 1 and 2. 2, what you have done to the sprint planning 1, you taken. In a sprint planning 2, you have to define how. How means not the way of the execution. How you will fulfill the quality also. That will come into the picture on the sprint planning 2. So, एक sprint का, you have already clarified all these things on the sprint planning 2 meeting. Understand that case? So, you are working following the same thing. Like how the quality nowadays maintaining. Tell me. How acceptance criteria के basis पे कौन डिसाइड करता है? Scrum Master. Question again question. Acceptance criteria के basis पे जो मैंने काम करा है वो कौन डिसाइड करेगा? Scrum Master. Review time पे. Scrum Master का कोई रोल नहीं है उसमें. Full reject. Reject. Product owner, stakeholder. एक क्वेश्चन, Yes, Asutosh. how a human can be responsible in a case? Suppose there can be a scenario with that scenario is missed from either from the requirement side or development side. If that is we are working as a team, so we cannot blame individual person. Yes. Responsibility. I agree with you. Okay, So quality. on that time I you. think it's a failure of a team. Yes. It's a failure of team, not a particular person. Yes. You can find out the reason during the review process. Means what
what is the cause of the failure or bug has been not found. Okay, now in the retrospective time, you will come to the point that we have missed the one test cases because the development didn't do. So developer side, whoever the developer is, like I'm a developer, so I will see you, oh, like that. So in the test cases, when you are doing the development on the VM, in the VM, you can ask on that time also, that ये तो हुआ ही नहीं है, this test cases is not failed, this test cases is failed, so you have to do your development some more. वो उस समय बोल सकते हैं, like something कि आपसे भी मिस हो गया, तो वो तो फिर that is the part of the lesson learned. Next sprint से हम लोग उस पर ध्यान देंगे. Like हुआ? No one is responsible. No one is responsible. We all are working within the team, so not can say like the Scrum Master. इस टाइप का सर्विस होगा ना तो ये वाला बिजनेस लॉजिक करना है. उसके अंदर ना लोकेशन आईडी का प्रोवाइडर आईडी पड़ा. डेवलपमेंट पूरा खत्म हो गया और यूआई में फील्ड मैनेजमेंट बनाया नहीं गया कि इस टाइप का सर्विस हो तो. वो तो अगर सर्विस if the service is not there, means the guys who is working on service side, that is the responsible. Of course not from him. Means हमारा जो पार्ट है, हमें जो मिला है, और वो सर्विस नहीं है हमारे पार्ट में, then we are okay because we have done up to that thinking. Whatever written as acceptance criteria we have done, that's okay. Apart from that, anything extra clients want or PO want in the review meeting, it's not our part. Then next sprint will follow. Just. अच्छा एक कि सपोज एक टास्क का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है Okay. ना, और मैंने वो काम उठाया और उसको कर दिया ना, और वो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग. Okay. सपोज एक टास्क का कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही हाई था बट माय एक्सपीरियंस वाज वेरी लेस एंड स्टिल आई टुक दैट टास्क एंड कंप्लीटेड इट. सो व्हिच वन इज अप्रिशिएटेड और इज इट अप्रिशिएटेड और नॉट? No one will appreciate on that type of things. Only what happens, like suppose you have taken the task and that is the complexity is like more and you did very fast. In that case you have the time to do the rest. One thing. Now depend upon you. If you want to do the rest, you are okay to do because you have doing that as per the velocity. But if you want, like first day you have done, second day you have done, almost second day you have done, you still have the 4 days to do something and your sprint backlog is nothing to do. Then you can ask with the Scrum Master, hey Mr. Scrum Master, you can ask with Mr. Product Owner that he will give some more tasks. If you want, if he have any prioritized list, I am free, I can do. It's a totally depend upon you. इसके बाद जब application आया तो समझ लो चार्ट ओपन दिखाएंगे. केजरीवाल बनोगे तो क्या होगा? हो गया? तो स्क्रम मास्टर जो कोई जैसे मैनेजर होता होगा रिव्यू करता होगा किसका? Your manager is doing review. Your manager is doing review based upon whatever the criteria he has fixed. But a Scrum Master is not a guy who will review. बहुत होगा तो वो facilitate करेगा मैनेजर को. बहुत होगा. क्योंकि टेंडेंसी तो वही होगी ना, मैं इजी टास्क उठाऊं और Again, our thinking is still in the we are learning the Scrum and thinking is like a waterfall model. That's why we are getting the confused. I told you, a Scrum Master is not a part on your appraisal or in your means whatever. But if project manager want to take help of the Scrum Master, can take because the Scrum Master is a facilitator. क्यों परेशान हो? डिसीजन आया था तुम्हारा, परेशान क्यों? और भी एक स्कोर. Thank you. Finish question answer. Thank you all guys. लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये था ना कि मैनेजर का परफॉर्मेंस देखा गया है, स्क्रम मास्टर आपकी चुगली कर सकता है.